Uh, so I'll start with this introduction of the project. अभी तक जो जो किया है वो एक बार बताता हूँ. So I have this idea of building an AI resume builder website. I'll be mostly working on it from parts में. तो initially we need to design a system which can handle much changes, so it should be some very modularized system. Also मैं काफ़ी ज़्यादा जीपीटी और एआई वगैरह यूज़ करने वाला हूँ इसमें, क्योंकि आइडिया है नहीं कुछ. तो लेट्स सी. ये फीचर्स रखे हैं कि so how it's gonna work is user gives their LinkedIn GitHub profile. It's a resume builder. So user selects a template after that. We need to automate as much as we can. So एक बार यूज़र आएगा LinkedIn एंड GitHub की प्रोफाइल, एंड देन उसके बाद में टेम्पलेट सिलेक्शन, और उसके बाद में वी रेडी रेज्यूमे फॉर देम बेस्ड ऑन all the data fetched from those APIs profile links. तो हम लोग उतना करेंगे. उसके बाद में AI इंटीग्रेशन है जिसके अंदर हम उसकी जो भी डेटा मिलेगा उसको एनहांस करेंगे, उसको रेलेवेंट डिटेल्स वगैरह डालेंगे, और जो भी होगा करेंगे. उसके बाद में हमारे पास में रिज्यूमे आ जाएगा. उसके बाद में यूज़र क्या करेगा कि यूज़र चेंजेस करेगा. सो हम लोग इस पे भी थोड़ा देख लेते हैं जितना बना हुआ है. ये एक सीक्वेंस डायग्राम है, और यूज़र आएगा. तो मैं बस फटाफट से रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ. ठीक है. तो यूज़र आएगा. यूज़र आने के बाद में यूज़र पे ऑनबोर्डेड है कि नहीं है ये चेक होना है. ये होने के बाद में हम लोग यूज़र से लिंक्डइन गिटहब प्रोफाइल लेंगे, यूआरएल लेंगे. अगर पहले से ही ऑनबोर्डेड है, इसका मतलब पहले से हमने प्रोफाइल लिंक्स ले रखे हैं, तो हम लोग सीधा होम पेज पे ले जाएंगे. होम पेज पे ले जाने के बाद में हम लोग को अगर नया रेज्यूमे बनाना है यूज़र को, तो नया रेज्यूमे बनाएगा. उसके लिए सेम साइकिल है कि टेम्पलेट चूज़ करना है, रेज्यूमे जनरेट करना है. और दिस इज़ वन फ्लो कि मैंने सोच रखा है. अगर नया यूज़र आता है तो उसको सीधा ऑनबोर्ड ना करके वी विल लेट देम create a template, a resume. So user comes, user gives their profile URLs, they choose templates, और उसके बाद में वो रेज्यूमे जनरेट करते हैं. उसके बाद में अगर उसके अंदर कोई चेंजेस करने हैं तो इट शुड रिक्वायर एन एडिट, सॉरी सर, उसके शुड रिक्वायर्ड ऑथेंटिकेशन. उसके बाद में यूज़र कैन डाउनलोड देयर रेज्यूमे एज PDF. एक्चुअली में चेंजेस इज़ वन थिंग कि अगर चेंजेस करने हैं तो कैसे कर सकते हैं. तो चेंजेस शुड बी अलाउड विद इन UI एज वेल, कि सीधा टेम्पलेट लिया और उसको चेंज कर दिया. चेंजेस जो है वो AI से प्रॉम्प्ट करके भी करे जा सकते हैं. और उसका एक यहाँ पे है कि डिस्क्रिप्शन की यू कैन आस्क AI प्रॉम्प्ट दे करके कि क्या चेंजेस करना है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूज़र ने गिटहब प्रोफाइल लिंक दे रखा है, तो वी कैन मेंशन एनी प्रोजेक्ट इन देयर गिटहब. AI खुद से फेच करेगा ऑल द डेटा एंड पुट करेगा उस प्रोजेक्ट के बारे में, एंड देन अगर निकालना हुआ तो उसमें से निकालेगा भी खुद से. सेम goes for experience or skills based on the data we give to AI. तो ये काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है, एंड देयर आर फ्यू मोर डिटेल्स कि वी कैन अवॉइड मेकिंग चेंजेस इन अदर सेक्शन बाय यूजिंग @. सो फॉर एग्जांपल वी हैव @. we'll go here. For example, we have @experience. So this is how the सजेशंस विल बी देयर. और उसके बाद में वो AI जो है वो उसी सेक्शन को टारगेट करना चाहिए. एंड उसके बाद में
हमको लाइव चेंजेस दिखने चाहिए एंड देयर आर मोर एडिशंस टू इट, देयर आर वे मोर फीचर्स आर थॉट, बट सारे एक साथ डालना पॉसिबल नहीं हो पाएगा. सो वी हैव दीज रोल्स कि हम लोगों के पास में नॉन ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स है, ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स है, एंड देन एडमिन्स है. Non-authenticated users can generate resume, but they cannot make changes in it, download it, prompt the AI, and neither they can save the generated resume. So yeah, they can download. I think we should allow them to download. We'll check it later. उसके बाद में authenticated users हैं तो they can do everything. Admins are there to manage users and create, edit or delete templates. उसके बाद में वी हैव टू मेक दिस माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, क्योंकि उसके अलावा इट विल बी क्वाइट डिफ़िकल्ट टू मॉड्यूलराइज एवरीथिंग एंड प्रोजेक्ट सीम्स टू बी अ बिगर प्रोजेक्ट. So I thought of using one user service. This will change for sure, but a user service to manage user data, a profile data fetch service. It's This is the one which will fetch all the data from profile links. And उसके बाद में we have a template service which is gonna be used for creating, editing, deleting templates. हमारे पास में resume generation सर्विस रहेगी जो कि resume जनरेट्स करेगी एंड ऑल. resume के जो भी चेंजेस होंगे वो भी सस्टेन होंगे इसके थ्रू. मोस्टली मैंने ये जो भी कंटेंट लिया है वो प्रॉम्प्टेड है एआई के थ्रू. जीपीटी बहुत सारा यूज़ करा है. सो कोई डाउट नहीं है इफ देयर विल बी अ लॉट ऑफ चेंजेस इन ऑल दिस. AI editing service and PDF rendering service, all these are gonna be there. Tech stack, I won't be using Java in it. I'll be using just Node in it, just to keep things speedy. उसके अलावा Postgres, most probably will use Postgres and Google Auth, JWT. Mostly Node and Python, because AI editing and probably like प्रोफाइल डेटा फेच सर्विसेज. सो इनके अंदर ये सब यूज़ होगा. उसके अलावा वी हैव टू सेटअप API गेटवे. आई जस्ट वांट टू लर्न दिस. मेरे को भी मैंने भी अभी तक कभी यूज़ नहीं करा. एंड देन मोनोरिपो इज व्हाट वी आर गोना यूज़ इन इट. आई ऑलरेडी सेटअप अ रिपो, सो विल लुक एट दैट right now or maybe later. Abhi we will continue with our sequence diagram. So this sequence diagram is not complete क्योंकि इसके अंदर validations नहीं है और तो हमारा वैसे आज टास्क यही है कि we need to add validation checks in our main flow and checking for each feature placement. So we'll be looking in depth in this. I'll be making changes in it. So user comes, user onboards, this seems fine, but home page with all resumes, I was thinking of separating out pre-generation and post-generation cycles. So I don't know if this is a legit HLD or not, but let's see. I'll separate out pre-generation, post-generation. This is pre-generation where user comes, user onboards and all these things. Resume is generated. So we'll just remove this one. Take these and maybe just separate them out or what. I'll just remove this one. We'll have two separate we will have two separate diagrams for post generation and pre generation. Okay, I have another diagram here. Shall I keep it horizontal? So
this is pre-generation and this is post-generation. We'll expand, sorry, we will expand this one first. Keep it a bit left. Yeah. So user comes, uh, and we check for the onboarding of user. If user is onboarded, we route them to home page with all their resumes. We check if the user can continue with their existing resume or they can create a new resume. If they continue with their existing resume, they just make changes in it, which comes in post generation sequence. I'll just write it here. So it's post generation. Um, if user creates a new resume, then we have to maybe check something now. We let user choose a template, then we generate a resume for them. Yeah, this is it, I guess. Then after generating resume, we will check. So let's just keep resume generated here as well. And so resume is generated, and उसके बाद उसके बाद में we check for user is onboarded, and if user is onboarded, then we allow so we just allow user to download the PDF if she's not onboarded. But if they are, so if they are onboarded, then we allow all the sections. So we allow them to make changes in resume. That could be directly in UI, or we allow them to download. We allow them to change the. So yeah, this is another thing. User can change the template after creating or generating the resume. So we have to uh, keep versioning of them, because they might not like the change in template and they might undo things. So we have to keep versioning as well. And this is a admin side of sequence diagram where admin comes, admin has to authorize them, and then they can manage the users and create templates. So we have to we have to put some validations here. We have to check if these links are valid or not. So I'll just add that. We'll just check. Um, Valid links. And then we can generate resume for them. We let them choose the template and then we generate the resume.